Metal forming process. First process we discuss forging operation. What is the forging? Forging हमारा एक process क्या है? Forging is the process of forming metal by application of intermittent blows or pressure to individual workpiece. Forging हमारा is the process of forming metal. Metal forming process है in this by the application of intermediate blows or pressure to individual workpiece. इस प्रोसेस में हम लोग देखते हैं जो प्लास्टिकली डिफॉर्मिंग मेटल्स या alloys हैं to a specific shape by applying a compressive force. It is important that it is a process of plastically deforming metals or alloys to a specific shape by applying compressive force. And also, unlike rolling, the product of the forging process are not a continuous flowing mass but discrete processes. And there are further, that is, unless specifically stated otherwise, forging is understood as a hot working process, but cold forging is also sometimes used. These are the basic forging operations or forging points. In this, we understood that the specified जो shape चाहिए वो by applying a compressive force या other forces. तो इनके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि फोर्जिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिससे कि आपको फोर्जिंग और अच्छे से क्लियर हो जाए कि फोर्जिंग आर जनरली जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम रोल्ड स्टॉक लाइक ब्लोम्स बिलेट और रॉड्स पर। और फॉर एक्सपेंशनली जब हम बात करते हैं तो लार्ज फोर्जिंग इन गॉड्स में बी यूज्ड विदाउट रोलिंग, हम आगे देखेंगे। एंड ऑल्सो फोर्जिंग रिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल बाय breaking up large grain formation or closing up cavities that may be present. And further, forging जैसे कि like other mechanical working process इसमें produce change of microstructure and grain size. And further, जब metal when the metal is made to flow in particular direction, then the metal will have a fibrous structure जिसमें कि grains जो हैं वो intertwined with elongated slag and other inclusion of the in the cast metal. And further, the metal has the highest strength and toughness in the direction of the fibers. This is important. The metal has the highest strength and toughness in the direction of the fibers, and the properties at the right angles to the fiber flow lines will be those are sound casting. And other characteristics of forging is by controlling the fiber flow lines in a forging, it is possible to make the metal strong in any desired direction. And also to get the maximum advantage of directional properties of forging, it is essential that a proper choice of direction of application of pressure is made. So it understood by application of pressure. And the control of direction of fiber flow lines is particularly important where shock and fatigue loading is in is encountered, and in static loading is not a very critical. And next is the optimum strength qualities produced by forging help improve strength to weight ratio of component, permitting weight reduction. These are the important characteristics of forging, जिसमें कि हमने यहाँ पे बात करी फोर्जिंग ऑपरेशंस के बारे में। व्हाट इज़ द फोर्जिंग, क्या होता है, जिसमें कि उन्होंने देखा कि जो ये प्रोसेस है जो कि प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है मेटल्स का या अलाय का टू अ स्पेसिफिक शेप बाय हम अप्लाइंग करते हैं कंप्रेसिव फोर्सेस। और साथ ही साथ में यहाँ पर देखा जो फोर्जिंग है लाइक अदर जैसे मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस होते हैं जिसमें प्रोड्यूस करते हैं चेंज ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर, ग्रेन साइज। Then we compare between the forged parts and the cast part.
तो इन फोर्जिंग में जो लार्जर ग्रेन आर ब्रोकन होते हैं इनटू स्मॉलर साइज which gives the better mechanical properties of the part. इन कास्ट पार्ट में जो ग्रेन साइज होते हैं वो मच लार्जर होते हैं साइज में। आगे बात करते हैं कि जो इनका जो फ्लो है, द फ्लो ऑफ ग्रेन इन forging gives directional properties of the parts or which can be utilized to advantage by properly aligning the grain flow direction. आगे बात करते हैं जो क्रैक्स या ब्लो होल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द इनपुट मटेरियल और वेल्डेड होते हैं टुगेदर इन द forging operations. And also a forged parts are able to absorb much higher shock than casting. These are the comparison between the forged parts and the cast part. एंड अगर बात करते हैं हीटिंग ऑफ द मेटल फॉर फोर्जिंग, तो जैसे कि पीसेस ऑफ ब्लोम्स बिलेट्स या रॉड्स कट द साइज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द गिवन वर्क पीस एंड heated to the correct hot working temperature in the furnace located near the forging station. And also the large variety of furnace available for the heating and the workpiece for the forging range from simple open forge fires to refractory line continued या batch type furnace with the precise atmosphere and temperature control. And also while heating the workpiece for forging, care should be taken to see the scaling, decarbonization, overheating, burning, and rupturing the metal are presented, and also any scale formed during the heating is undesirable unless it is prevented or removed before forging. It would be embedded in the workpiece, causing a weakness. Scales also cause rapid die wear, and also in rapid heating and immediate forging would be prevent scaling and decarbonization, but may cause a rupturing due to temperature stresses. Uniform and gradual heating is the most desirable. And also a coal, oil, or gas are generally used as a fuels for heating. Induction heating can also be used. Induction heating is very useful in preventing scaling, decarbonization, burning, rupturing, but special coils are required to different shape and size. For satisfactory forging, the workpiece must be heated to the correct forging temperature. And optimum forging temperature for different metals and alloys at the start and the end of forging operation. So this is a table. In this table, we discuss metals and alloys. There are mild steel, medium carbon steel, high carbon steel, wrought iron, aluminum and magnesium alloy, कॉपर ब्रास एंड ब्रोनेज। और इनका फोजिंग टेम्परेचर आप देख सकते हैं। फोजिंग टेम्परेचर स्टार्टिंग का है 1300 इन माइल्ड स्टील एंड एंडिंग का है 800। फिर मीडियम कार्बन स्टील का है 1250 एंड एंडिंग है 750। फिर हाई कार्बन स्टील का 1150 से 825 एंड रॉट आयरन का 1275 एंड एंडिंग है 900। एंड फिर एलुमिनियम एंड मैग्नीशियम अलॉय का जो फोजिंग टेम्परेचर आप देखते हैं स्टार्टिंग होता है 500 से एंडिंग होता है 350 एंड कॉपर ब्रास एंड ब्रोनेस का 950 से 600। तो वी डिस्कस what is the forging and characteristics of forging, comparison between the forged parts and the cast parts, heating the metal for forging, and optimum design temperature of different metals with the help of this table.